अब मुझे पता है कि मेरे को सुरेश रैना के साथ शो करना है, आरपी सिंह अरे के साथ यार, शो करना है। अब मन में, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ चेन्नई सुपर किंग फैन, तो वो सामने से आए, मुझे बता रहे कि सुरभि तुम मुझे ये पूछ सकती हो, तुम मुझे ये पूछ सकती हो, मैं तुमको जवाब दे दूंगा। मैं उस मोमेंट में सोच रही हूँ कि मैंने हमेशा से सुना था कि सुरेश रैना बहुत हम्बल इंसान है, बहुत हम्बल इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ है। उस मोमेंट में मैंने एक्चुअली वो जिया। So 2020 में I remember he announced 1929 hours, consider me retired. And I'm like, shit yaar. And he's the only one who can do this. Like doesn't care about timing and all of that. कि हाँ ठीक है यार. Announced his retirement via an Instagram post. Every crowd had more yellow than the home side. मैं अपने आप को example देती हूँ. Be like Surya Kumar Yadav. He just goes out confidently. That is another man. Expresses himself. I have so much respect for. I think after Dhoni. पहला बॉल छक्का मारेगा, पता नहीं कहाँ पीछे मार रहा है छक्का. क्या है भाई? So you can sit आराम से पीछे, आराम से comfortably. हाँ. This is the vibe we want. सही है कैमरा? फ्रेम सही है? Cool. एक बार. I'm doing this for the first time. So. अरे हमारा we are also doing the entire podcasting for the first time only. So it's okay. एक बार please मोहित भाई फ़ोन दो ना please मेरा. थोड़ा बाल देख लेते हैं भाई, ठीक है कि नहीं? सही है? अब आदत हो गया भाई. ये एडिट में प्रॉब्लम होता है. एक एपिसोड में ना ये वाला बाल ऐसे निकला हुआ आ गया, और वो पहला 20 मिनट के लिए बाल ऐसा ही है. फिर व्हेन आई डिड दिस तब नेक्स्ट एपिसोड पूरा एपिसोड के लिए ठीक हुआ है. एनीवे, वेलकम टू द चिल आवर एपिसोड. टुडे we're having a chill hour, and today it's a little selfish interest of mine, because cricket is something that's very close to my heart, and today we're going to be discussing cricket IPL that's going on right now and a bunch of things. And today we have Surbhi Vaid with us. Thank you. Surbhi is somebody who hosts the IPL, so you must have seen her on TV. I have also seen her on TV. Today I'm seeing her with me here. So welcome Surbhi on the show. Thank you so much, Deepak. That was a nice, sweet intro. How is it going? It's going good. आप comfortable I'm हो? here. Yeah. आपको पीछे होकर आराम से बैठना है. Yeah, You're मैं good? ठीक हूँ. I'm good. By the end of it, I'm sure I'll be sitting like you. Oh my. चलो ठीक है. माइक सही है? आवाज़ आ रही है ठीक से? बढ़िया. क्या चल रहा है सुरभि? What's happening? The chill hour Yeah. is happening right now. I am so excited for this because I've not done a podcast in my life. Oh. So this is my first podcast. Good start. Yeah, my first with you. The best start. Yes. Yeah. ये तो हम बाउच तो करेंगे ऐसे. What's happening? क्या चल रहा है? How's the IPL coming along? Yeah, it's coming good. I mean, I wanted RCB to win and qualify for the eliminator so that we can see RCB versus LSG once more. Yeah. Because that was like vintage IPL where you see bantos and where you see all that you slightly love as a cricket fan, if you'd be honest. Yeah, of course. So I wanted that, but cool, okay. MI it is. So yeah, that's happening right now. I mean, IPL is going good. Yeah. Yeah. I've always seen IPL. But I never thought that I'll be a part of it. How did it all happen? Yeah, it began, like I joined Jio last October. It began with FIFA. Again, a big deal. Yeah. Great start, I must say. FIFA, Yeah, touch first wood. time. There's wood. Yeah. Great start. फिर IPL great start. First time podcast also great start. I was waiting for that to come. Anyway, carry on. Yeah. Yeah, so I joined them in October. Then FIFA happened. Then SA20 happened. It's a T20 league played in South Africa. Okay. What is it called? SA20? Yeah, SA20. South African T20 league. Acha. So you have all the same teams playing there. So you have Mumbai Indians ka franchise over there, but it's called, I don't remember right now. So it's like वो West Indies Caribbean Premier League की तरह है. हाँ, it's like, but all the franchises over there are owned by Indians. Like you have Chennai Super Kings over here, you have Joburg Super Kings over there, you have Mumbai Indians over here, or you have MI Cape Town over there. Owner same है. Yeah, owner same. All the 6 teams are owned by Indian franchises only. The franchises that are already playing here.
So it was very interesting because it was a mini IPL before the IPL. Yeah, so that happened. Then WPL happened. I think. Oh, awesome. That was again my first and WPL's first as well. Yeah. And that was like on ground. First time for me to go to the venue and host shows. The vibe, oh my god. I will prefer ground over studio any given day. थोड़ा बता दो यार, बहुत मजा आता था. जैसे ही आप उतरो, आप देख रहे हो कि सब चिल्ला रहे हैं, they are vibing. Yeah. And you can see the players कि पीछे खड़े हैं. यार, ये तो यही स्मृति मंदाना है जिसको हम देखते थे टीवी पे. ये हरमनप्रीत कौर है. So you always, मतलब I have always been a cricket fan. It's not like I was into anchoring and then I came into sports. अच्छा. I always wanted to be in sports. पहले के बारे में पहले आप कंटिन्यू करो, फिर मैं दूसरे सवाल, नहीं तो फिर एडिट में प्रॉब्लम होता है कि हमने नोटिस किया है. Anyway, हाँ, so you were interested in cricket and then so I was women's Premier League का exactly. So when you watch cricket, you're like, oh, Harmanpreet Kaur, oh, Smriti, oh, Jemima. Yeah. You're like, wow. And when you are like standing right next to them. Yeah. I remember taking Harman's interview, taking Smriti's interview, like talking to them. How are they in person? It just feels so normal. They are so, I mean, हम लोगों को भगवान बनाने की हमारी जो आदत है ना इंडियंस की, पर वो लोग एकदम ह्यूमन, मतलब they are like us, like how you are, like how I am. Right. They're very normal. They'll talk also very normally, and then you feel वो respect ना अपने आप बढ़ जाती है. I mean, I've always मतलब ये चीज़ मैं अपने आप को और लोगों को बहुत बार बोलती हूँ कि आप किसी के बहुत बड़े फैन हो सकते हो बिकॉज ही इज़ अ क्रिकेटर और शी इज़ अ क्रिकेटर, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ दैट पर्सन ट्रीट्स यू व्हेन यू मीट देम. मतलब आप परसेप्शन ब्रेक होता है ना. हाँ, आप समझो आप XYZ के बहुत बड़े फैन हो, फिर आप जब उनसे मिले, उन्होंने आपसे थोड़ा बताओ, परसेप्शन ब्रेक हुआ क्या आपका? नहीं, मेरा एक भी बार नहीं हुआ. ये तो आपको बोलना पड़ेगा. नो, बट ऑनेस्टली मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जितने क्रिकेटर्स से मिली हूँ ना अब तक, जितने भी मेल फीमेल, सब इतने हम्बल है, सब इतने अच्छी तरीके से आपसे बात करेंगे ना कि आपको लगेगा. किसी के बारे में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बताओ. यार, मुझे याद है SA20 माय फर्स्ट शो क्रिकेट. मैं पहली बार क्रिकेट का लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी. उससे पहले मैंने सिर्फ फुटबॉल किया था. And cricket in India is a religion. Everybody who's watching you already knows everything that you're talking about. I've always been a Chennai Super King fan. So मन में ऐसे कि यार चिन्नथाला के साथ शो, बट तुम वो दिखा नहीं सकते. और मैं मिली उनसे 5 मिनट पहले, ऐसे शो शुरू होने वाला उसके 5 मिनट पहले I met them. And I was doing it for the first time. I've started doing sports broadcast. I was watching you in अभी मैच के पहले. And you have such ऐसा good command over हिंदी. हम इसको हिंदी में करें क्या, जैसे आप करते हो? कर लेते हैं. हाँ, है ना? आप ऐसे बात करो जैसे आप कर रहे थे, जैसे अभी पूरा प्रॉपर हिंदी में. प्रॉपर हिंदी में बात करते हैं यार, कोई बात नहीं. हाँ, तो आप ऐसे ही बात करो एक बार. अभी आप जो पूरी, हाँ, अभी आप पूरी कहानी वैसी बोलो जैसे एज इफ अब मतलब मैं वापस हिंदी में पूरी चीज बोलूं. हाँ. अरे वाह. नहीं, अभी से कंटिन्यू करो. चलो अभी से कंटिन्यू करो. तो कहाँ थी मैं, भूल गई. चिन्नथाला के साथ शूट था, 5 मिनट पहले मिले. अब मन में चेन्नई सुपर किंग्स की फैन ऐसे फुदक रिएक्ट की, ओ माय गॉड, बट वो शक्ल पे नहीं आ सकता क्योंकि तुमको फोकस करना है. अभी तुम क्या सवाल पूछोगे, क्या करोगे. तो शो से पहले चिन्नथाला मुझसे मिले, RP सिंह मुझसे मिले. चिन्नथाला ने मुझे बोला यू आर अ प्रो. अच्छा. शो से पहले उन्होंने मुझे बोला यू आर अ प्रो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. तो इस कमेंट से आपको ज्यादा डर लगा कि खुशी हुई? यार, मुझे ऐसा लगा कि भाई अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं, इसके बाद अगर मैं कुछ गलत कर दूं, अब अगर आपने हक दिया तो क्या होगा. तो मुझे याद है, और मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मैंने क्रिकेट शो कभी किया नहीं था. फर्स्ट शो था, सामने 2 बड़े क्रिकेटर्स. दिस इज SA20 माय फर्स्ट क्रिकेट लाइव शो. फिर उसके बाद मुझे याद है मैंने टॉस पे थ्रो किया, और जब आप ऐसे कुछ टॉस पे थ्रो कर रहे हो या प्रेजेंटेशन पे थ्रो कर रहे हो तो आपको हार्ड कॉल्स मिलते हैं. मतलब जैसे थ्रो कर रहे हो, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं चिन्नस्वामी में, मतलब समझ गया. तो जब आप वैसे थ्रो कर रहे होते हैं ना तो आपको हार्ड कॉल्स मिलते हैं. मतलब डायरेक्टर बोलता है कि 10 सेकंड में थ्रो करना है. अच्छा. तो वो थ्रो करने के बाद ऐसे टॉस पे हम खड़े हैं, हम टॉस देख रहे हैं,
हाँ. तो वो सामने से आए मुझे बता रहे कि सुरभि तुम मुझे ये पूछ सकती हो. Nice. मैं उस मोमेंट में सोच रही हूँ कि मैंने हमेशा से सुना था हाँ. कि सुरेश रैना बहुत हम्बल इंसान है, बहुत हम्बल इंसान Correct. है, बहुत डाउन टू अर्थ है. हाँ. उस मोमेंट में मैंने एक्चुअली वो जिया. हाँ. और Sweet. मैंने वो महसूस किया कि Sweet. हाँ मतलब इट्स नॉट अ रूमर जो Were you starstruck when you first met Chinnathala? नो मैन आई वाजंट स्टारस्ट्रक. हाँ अंदर से बहुत फुदक. बहुत ज्यादा फुदकना हो रहा था, बट स्टारस्ट्रक नहीं हुई बिकॉज तब उस समय ऐसा था ना कि नहीं शो करना है और फिर वो तुम फैंडम नहीं दिखा सकते उतना. पर कभी वो दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. पता है वो इतने हम्बल है ना. आप अगर आप भी उनसे मिलोगे ना आपको लगेगा आप उनको जन्मों से जानते हो और वो आपको जन्मों से जानते हो. यही होता है भाई, यही रेज रात के 1 बजे दिखता है लोगों को. एनीवे हाँ. सो वी डू दैट अगेन. नहीं आप कंटिन्यू करो यहीं से. विल कट दैट पार्ट. कट तो हम कुछ करते नहीं है, बट ठीक है हम बोलने वाली बात है. यहाँ पे म्यूजिक डाल देंगे. हाँ सो दैट हैपेंड. तो बहुत बहुत अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि यार ये तो नॉर्मल है. या मतलब हम भगवान मानते हैं, हम भगवान बनाते हैं, पर नॉर्मल है, इंसान है और इंसानों जैसे ही बिहेव करते हैं. इंसान मतलब खाते भी सेम है, पानी भी सेम पीते हैं, रहते भी सेम जगह है. प्यारी है क्या? मतलब इंसान ही तो है, खाते भी वही है. हाँ मतलब हम ऐसे सोचना क्योंकि आप इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ते हो. व्हाट डज सुरेश रैना ईट? अच्छा वैसे हाँ मतलब because we idolize. What does he eat? हाँ. Where does he live? You've read those articles, no? You've seen those videos, no, on YouTube. Yeah. So I'm just saying कि फिर वो हमारे जैसे ही है, simple, साधे, nice human beings. Interesting. I still remember Robin Uthappa. He's also one of the sweetest guys. So I remember FIFA World Cup के time पे he came in the finals. अच्छा. Like हम final में show कर रहे थे. शाहरुख खान भी आए थे उस show में. तो I wasn't a part of it though. I started. So the show was 7 to say 8:30 or so, something like that. So I was a part from 7 to 7:30, like the initial half an hour. I remember Robin was a part of it because we wanted to promote IPL and because Shahrukh had come and KKR के लिए Robin खेल चुके हैं. Shahrukh के अच्छे दोस्त हैं. Correct. So Robin was a part of that show, and so there was this plan कि हम एक pre-recorded opener shoot करेंगे with all the experts, but somehow that didn't happen. So then anchors had to do it. अच्छा. Like I'm good and also bad at memorizing things. But अगर आप कुछ पढ़ने दोगे मैं 2-3 बार पढ़ लूंगी ना, तो उसके बाद मैं 5 मिनट तक के डेडलाइन तक मैं डिलीवर कर सकती हूँ, उसके बाद मैं भूल जाऊंगी. तो मुझे याद है वो हमें ऐसे एक ओपनर लिख के दिया था और मुझे वो बोलना था. तो मैंने मोनोलॉग जैसे हो गया क्योंकि मैं अकेली खड़ी थी और मैं अकेली बोल रही हूँ. तो मैंने वो बोला, रट्टा मारा था उधर ही सबके सामने बैठ के खड़े होके ऐसे फटाफट रट्टा मारा. 5 मिनट का टाइम था प्री रिकॉर्ड करने का, तो रीटेक्स का भी ऑप्शन नहीं है. करेक्ट. तो वो फटाफट किया. उसके बाद मुझे याद है जब IPL में रॉबिन आए तो मैं रॉबिन से मिली. तो मैं उनको मिली, मेरे को अब मुझे तो वो याद है ना ऑब्वियसली. तो मैं उनसे मिली, हाय रॉबिन हाउ आर यू, थिंकिंग दैट ही विल रिकॉग्नाइज मी. बट अब मैं सोच रही हूँ कि यार सुरभि क्या कर रही है. उनको थोड़ी याद होगा कि वो फीफा के टाइम पे उनके साथ शो कर चुकी है. तो ही सेड आई एम कूल, आई एम नाइस, आई एम गुड. मैंने कहा फिर मैं चली गई वहाँ से बिकॉज आई वाज सो एम्बैरेस्ड. एंड देन मैं आकाश चोपड़ा के साथ एक बिट रिकॉर्ड कर रही थी इंग्लिश स्टूडियो में. तो वहाँ रॉबिन आए. तो रॉबिन को मैंने बोला, रॉबिन सॉरी यार, आई थॉट यू विल रिकॉग्नाइज मी, आई रिकॉग्नाइज्ड यू. सो इन दैट यू नो उस खुशी में मैंने ऐसे आपको ग्रीट किया. ही सेड नो आई रिमेंबर यू, वी डिड द शो टुगेदर फीफा में. तो अब मन में सोच रही हूँ कि यार फॉर मी टू रिमेंबर रॉबिन इज वन थिंग, बट फॉर हिम टू रिमेंबर मी इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. एंड देन ही ऑल्सो रिमेंबर दैट आई डिड दिस मोनोलॉग फीफा के टाइम पे. वो आकाश चोपड़ा को बता रहे थे कि फीफा के टाइम पे इसने 5 मिनट का मोनोलॉग दिया था. अरे स्वीट. मैं उधर पिघल गई. ऐसे तो हम सकते हैं लेकिन यहाँ मैं फेल गया. लेट मी आस्क यू, प्रॉब्ली अगर मैं ये नहीं पूछूंगा तो लोग शायद गालियाँ देंगे मेरे को बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट क्रिकेट. आई एम गेसिंग you've understood where I'm going. Because you're talking about cricket, because we've spoken about Chinnathala, because we've spoken about CSK.
Have you met Thala till now? Bro, I'd be in heaven by now if I'd met Thala. No, not yet. Not yet. Waiting for that day. There's one. So मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे मैचेस स्टेडियम में नहीं देखे क्योंकि टिकट्स इतनी महंगी होती है. And I come from a middle class family, so I couldn't afford going to the stadium. So I remember हम एक मैच था ब्रबॉन स्टेडियम में फ्री ऑफ कॉस्ट. प्रैक्टिस मैच था इंडिया इंग्लैंड शायद, और धोनी का लास्ट मैच एज कैप्टन. लाइक प्रैक्टिस मैच में ही वाज कैप्टनिंग. या आई रिमेंबर इसका ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ था शायद. दिनेश कार्तिक रिटायर्ड हर्ट हुए थे बिकॉज धोनी की बारी नहीं आती, वरना ही वाज प्लेइंग दैट गुड. आई वाज सिटिंग देयर. हम जाने से पहले, स्टेडियम के अंदर जाने से पहले, वो नॉर्मली स्टेडियम के बाहर जर्सीज बेचने वाले बैठे रहते हैं ना, तो अब 200 रुपए जो ओरिजिनल जर्सी खरीदने की तो मेरी वो नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी. तो अब मेरे सारे दोस्त जर्सीज खरीद रहे, 100 रुपए की मिल रही थी. 100 रुपए की, करेक्ट. तो मैंने बोला भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं अगर लूंगी तो मैं धोनी की नाम लिखी हुई जर्सी लूंगी, वरना आई एम नॉट टेकिंग. सो दे वो कन्विंसिंग मी, ब्रो ले ले, कोई बात नहीं, ले ले. मैंने बोला लेनी ही नहीं है मुझे. फिर मुझे याद है कि वो भैया के पास धोनी की सारी जर्सीज खत्म हो गई थी. तो एक बंदा आया, उसने बोला कि मैं ये जर्सी लेकर गया हूँ, इसमें पीछे वो उसमें ना धोनी के नाम में ऐसे कुछ तो स्लाइड सा वो कपड़ों में डिफेक्ट होता है ना, वैसा डिफेक्ट था. तो भैया ने उसके हाथ से ली, बोला रुको मैं देखता हूँ दूसरी. मैंने बोला धोनी की जर्सी है ना. आई एक्चुअली स्नैच्ड इट, गेव हिम मनी एंड रैन फ्रॉम देयर बिकॉज़ आई न्यू दिस गाय. I'm like ये बंदा तो अब when he realizes कि और कोई जर्सी नहीं, he'll be like ठीक है ये यूज कर ले. तो मैंने बोला उससे पहले वो बोले कि मैं ठीक हूँ, लेके भाग रही हूँ, मैं ये लो 100 रुपए हो गया. So that was another. मतलब I've done all, like I'm crazy Dhoni fan, like I'm crazy. Yeah. I actually like I dedicate a lot of things that I've done to him. Like मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ, उनको पता भी नहीं है कि मैं exist करती हूँ इस दुनिया में. पर same. He doesn't know I exist, but still. Yeah. So मैं मतलब इतनी सारी चीजें, like I feel कि because I love sports, it's a very good thing. Like a lot of people are not really into sports and not. Sports teaches you a lot, a lot on a daily basis. I still remember when I was doing my masters, I had to pay for my education. So I had to work. मैंने graduation के बाद 1 साल का break लिया. I was working. I was doing odd jobs. Like I did a job as an accountant. I hate accounts, but I had to do it to, earn that money so that I can all do of it my in masters. Bombay only. Yeah, all of it in Bombay. So I still remember तब जब मैं वो करती थी ना, मुझे MS धोनी मूवी याद आती थी. मुझे याद आता था उसमें वो उनको बोलती थी कि जब तक you can't face a bouncer, duck. हर बॉल एक समान थोड़ी ना मिलेगा. Exactly. So all those things keep you going. ये सारी चीजें जो उन्होंने अपनी लाइफ में, मतलब he's also done a lot of things. Correct. और यार जब आप किसी चीज के लिए इतने पैशनेट होते हो ना, जैसे मुझे पता था. He found Sakshi in my city, Calcutta. हाँ. ITC Taj hotel शायद. Anyway, हाँ, not important now, but yeah. He's also worked in your city. Kharagpur. So yeah, मतलब all those things they teach you something or the other. मतलब जब वो TC का काम कर रहे होंगे और उनको पता है कि उनको क्रिकेटर बनना है, and he's doing this. रोज दिमाग में क्या चलता होगा. Even when I fondly remember like the movie where उनका नाम नहीं आया था in the selection and his friends were some more. I just saw this right now. It's nice. इसीलिए हम चाहते थे कि आप कुछ कॉफी अच्छा चल ले. अभी मैं सोच रही हूँ इतना मुझे क्यों फोर्स किया जा रहा था. नहीं, कुछ ना कुछ तो पीना पड़ेगा. We are sweet people. But the coffee is not. Cool. You were saying something. You can add your sweetness to it. Nice way to cover it up, but cool, let's go ahead. Anyway, so I was just saying that the movie, उसमें इतना अच्छे से दिखाया गया that he was and his friends used to see the news and the announcement of the team and he was not selected. And Dhoni was like, हाँ ठीक है, मतलब मेरे को नहीं देखना है. I remember there's this scene where he started playing badminton. Yeah. वो बैडमिंटन खेलने चला गया and then he's like समोसा खाएगा. हाँ, समोसा लेके आया उसके लिए, दोस्तों के लिए. But then he said कि हमको समझ में आ गया है कि इतने से नहीं होगा और मेहनत करना पड़ेगा. And that is like the breaking point where tipping point where you realize that he realizes that इतने से काम नहीं बन रहा है. हाँ.
you have to put in more effort. You have to put in like कुछ तो करना पड़ेगा ना टीम में आना है तो. और इतना मेहनत से तो नहीं होगा. So the movie holds a very special place now. Yeah. It does. I mean, the man is also so special. I mean, cricketers आते हैं यार और cricketers जाते हैं. Is there any other cricketer who is more loved than exactly my point. Mahendra Singh Dhoni? Exactly my point. मतलब you've seen legends. I have goosebumps when I say this. It's यार मेरी एक दोस्त है. She works for Punjab Kings. तो उसने ना जब वो चेन्नई गई थी मैच के लिए जिस दिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे. जिस दिन आप MS धोनी से मिलोगे, ठीक है, अब पता नहीं आपको याद रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, मेरा तो काम है मैं बोल देता हूँ. मैं एक मैसेज लिख के दूंगा, आप वो मैसेज बस डिलीवर कर देना. पक्का. ठीक है. फर्स्ट चीज हमेशा याद रहती है ना. फर्स्ट द चिल्लास, तो ये याद रहेगा. ठीक है. और मेरे को भी मिलना है तो आप थोड़ा हेल्प कर देना. यार मैं खुद इतनी I still remember मेरा एक दोस्त है जो but you're not doing on ground now. No, not for IPL. You have on ground होने से तो फिर मौका मिल जाता है ना. हाँ. मिलने का. यार कुछ करो ना यार सुरभि. अगले साल तक. अगले साल नहीं, अभी कुछ करो ना 1-2 महीने में. अब तो खत्म ही हो गया. यार मुझे याद है कि मैंने अपने कितने सारे दोस्तों से बात करना बंद कर दिया था बिकॉज दे मेट धोनी एंड दे डिडंट टेल हिम अबाउट मी. There's a fan who exists or they didn't record a video कि धोनी सिर्फ हाय बोल दो, हाय सुरभि, या मेरे लिए ऑटोग्राफ ले. इतने निकम्मे दोस्त है, किसी ने ये नहीं किया. Like literally stop talking to them. हम लोग मैं बात ही नहीं कर रही हूँ. I've cried and I've told mom, मम्मी मैंने क्या गलत किया, मुझसे क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे कब दिन आएंगे जब मैं महेंद्र सिंह धोनी से बोला कोई बात नहीं. मम्मी लाइक धोनी तो है कोई बात नहीं. अच्छा. She knows how crazy I am for him. यार I've cried for him. Like I've literally cried. So my mom thinks I'm a psycho. कौन रोता है? नहीं बनता है यार. पागल है. I cried. I remember. I cried when he announced his retirement. Oh, that तो. I cried. I remember. Like I remember I was sitting in like उस समय COVID था उस समय. Amidst COVID he retired. I don't. Yeah. Amid. COVID only ना. 21st नहीं 15th August I think 2021. Yeah, I think 2021. नहीं not 2021, 2020. 21 में तो मैं बाहर था. I was not in India. So 2020 में I remember he announced 29 hours consider me retired. And I'm like shit यार. And he's the only one who can do this. Like doesn't care about timing and all of that कि हाँ ठीक है यार. Announced his retirement via an Instagram post. And he's not that active on social media, I imagine. He's following 2 people like Amitabh Bachchan and Amitabh and Sakshi. I don't know who's the Sakshi. And Ziva. 3 people he follows as far as I remember. जितना मैंने उनको stalk किया. He's not active on social media at all. Initially he used to be जब वो सर जडेजा के बारे में इतने सारे ट्वीट्स किए. Did you see the when अभी I think 2 दिन पहले CSK का जो मैच था जिसमें जडेजा was no not this was yesterday only. CSK DC. Jadeja said in the press conference कि अरे यार it's so sweet of him. It's so sweet of but him. He's like अरे मैं आता हूँ बैटिंग करने तो लोग बोलते आउट हो जाओ क्योंकि माही भाई आएंगे. बट मैं ऐसे कैसे आउट हो जाऊँ यार. बट एग्जैक्टली सी द क्रेज नो कि एक विकेट गिरने के बाद लोग खुश हो रहे हैं. You know this happens one more time. This happens in India games when the first wicket falls. Because Virat Kohli comes into bat. And it's so sad because if either Rohit Sharma or anybody with him, say Shubman Gill or KL Rahul is batting with him. But it's still not as much as of course, the MSD. Bhaiya, so what we usually do here, Surbhi, on the show is that अगर कोई स्टोरी शेयर करता है ना यहाँ पे किसी भी इंसान का जिससे I also resonate and I also like, we manifest. Okay, let's that manifest. We will get him or her on the show. अब माही भाई यहाँ बैठे नहीं बैठे पता नहीं 5 मिनट मिल जाए माही भाई के साथ तो I think we're manifesting one ऐसा show or a conversation with Mahi, with the Mahendra Singh Dhoni. Only God can help. And Mahi obviously. And Sachin. Anyway. No, but yeah, I mean, I तो dedicated a lot of things to him, like a lot. मुझे ऐसा लगता है कि मैं actually I started following cricket in
2007 जब वर्ल्ड कप चालू था, युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे, Yeah, मेरे yeah. भाई और मेरे पापा वो शो देख रहे थे, शो क्या मैच देख रहे थे, क्वार्टर फाइनल. एंड आई रिमेंबर जब वो 6 Quarter छक्के लग final? गए ना, उसके बाद मेरा Quarter final भाई था, हाँ. मेरे पापा की गोद में था लिटरली, एंड वो बड़ा था तभी, ठीक है, बिकॉज एंड आई वाज लाइक कि भाई ये क्या क्रेज है, भाई आर दे सो हैप्पी अबाउट इट, एंड आई जस्ट स्टार्टेड वाचिंग देम. I was sleeping that time. Yeah. I really want that reaction because I was sleeping and matlab, यार I was a kid back then, so I eat, sleep, repeat cricket. So, but I was like, यार ठीक है, and I slept. And Papa comes in, and Papa is like, उठो. At that time, Yuvraj hit 2 sixes back to back. Yeah. ठीक है. I'm talking about the 6 sixes वाला game. Yeah. Exactly. India versus England quarter final. 19th over he hits 2 sixes back to back. स्टुअर्ट ब्रॉड को एक बॉल पहले एंड्रू फ्लिंटलॉफ के साथ झगड़ा हुआ है उसका, पूरा गुस्सा स्टुअर्ट ब्रॉड पे निकाल दिया. 2 छक्का बैक टू बैक ही हिट्स एंड पापा कम से मैं पापा लाइक अरे उठो छक्का मार दिया. हाँ ठीक है डिस्टर्ब मत करो. सेकंड 6 ही हिट्स, अरे उठो 2 छक्का मार दिया. अरे ठीक है कोई नॉर्मल बात है, 2 छक्का क्या बड़ा बात है. हिट्स 3 हिट्स 4 हिट्स 5. तुम उठो यार, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये तुम साला तुम्हारा नींद क्या है, तुम ऐसा क्या काम कर रहे हो, अभी 10-12 साल तुम्हारा उम्र है, तुम क्या कर रहे हो भाई. देन आई गॉट अप टू वॉच द लास्ट 6 एंड आई वाज लाइक भाई 6 छक्का लगा दिया स्टुअर्ट ब्रॉड को. स्टुअर्ट ब्रॉड सोच रहा है भैया. So I started following cricket because of Yuvraj Singh and I've always like adored that guy. But then I became a MSG fan. अरे यार इतना सिंपल कोई कैसे हो सकता है. You open Instagram and you see the love he gets. It's just immense. Like I read it somewhere. चेन्नई का IPL पेज देखो. It is just मतलब everybody is just fanboying over the man. बनता भी है ना यार. अभी मैंने कल परसों का ही पढ़ा था कि जब इंडिया इंटरनेशनली उन्होंने रिटायरमेंट ली तो there was no farewell match. Yeah. Like everybody kind of wants a farewell match or deserve तो हर कोई करता है. Yeah. But you as a fan also you deserve that farewell match. No, अब मुझे याद है 2019 का वो वर्ल्ड कप जहाँ वो रन आउट हुए थे, that's his last international game. And I've cried because I remember Martin Guptill. I hate Martin Guptill for this. Even till इतनी गालियाँ खाई हैं उस रन आउट के पूरा लिए. He was भारत just doing his job. पूरा भारत. And I remember भाई मतलब Jadeja and Dhoni, the last freaking pair to have made it possible if at all. यार हम this guy इधर ही राउंड मार रहा है. पेट्रोलिंग कर रहा है. हाँ कितना मतलब घर पे हम कितना बोलते हैं धोनी है तो मुमकिन है, धोनी है तो, बिकॉज यू स्टिल हैव वो उम्मीद होती है कि नहीं यार धोनी है ना संभालेगा, धोनी है ना कर लेगा. मुझे याद है जब धोनी आउट हुआ, मैं तब एक एजेंसी में काम करती थी. आई यूज्ड टू राइट स्पोर्ट्स. तो मैं वो मैच देख रही थी और मैं पंजाब किंग्स का सोशल मीडिया हैंडल करती थी. तो मैं मतलब बिकॉज इट्स वर्ल्ड कप, यू कवर एवरीथिंग, यू कवर एवरी गेम, सो आई वाज डूइंग दैट. एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं, मेरा एक दोस्त कृणाल करके था, वो ही इज़ ऑल्सो अगेन अ वेरी बिग CSK फैन, वेरी बिग MSG फैन. तो हम सब ऐसे बैठ के मैच, और मेरे ख्याल से वो मैच रिजर्व डे पर गया था क्योंकि पहले दिन बारिश हो गई थी. वी वर प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पहले दिन बारिश हो गई थी, नेक्स्ट दिन रिजर्व पर गया था. या इंग्लैंड में हो रहा था मैचेस. वी स्टार्टेड बैटिंग, रोहित शर्मा गॉट आउट, विराट कोहली गॉट आउट, who was there? शिखर धवन शायद. नहीं शिखर तो वेंट आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया मैच, वापस आ गया था. ही वाज इंजर्ड. आई डोंट रिमेंबर. मेरे को याद है 3 विकेट्स गिर गए थे हमारे बहुत जल्दी. विजय शंकर वाज देयर. Vijay Shankar didn't open. 2 openers went down and then Virat Kohli went down. I don't remember who. Rohit and KL then. हाँ, Rohit and KL went down and then Kohli also got out. And then I think Vijay Shankar came in. हाँ, and then we were all sitting in this small room and watching the match together, covering the match. And I remember जैसे ही धोनी out हुआ, the entire वो sports agency है, तो imagine. हम तो यहाँ सिर्फ 2 हैं, वहाँ तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग. सो सब के सब सन्नाटा, पूरा ऑफिस वाज शांत. एंड देन यू सी अ गाय who's not like who doesn't express a lot. You see उनकी आँख में आंसू. He was crying, right? Yeah, उनकी आँख में उस समय आंसू थे. And when you see your idol crying, it just hits you differently. And you see कि he wanted it.
Everybody wants World Cup, obviously. Yeah, But of course. you For could him. you could see Yeah, कि yeah. he also knew that You this could is his sense last. it, yeah, for sure. This is his last. For sure. So you wanted for like Yeah, और बहुत जैसे अभी हाँ. for IPL, you know it's his last. यार मत बोलो यार, want to मत see, बोलो as a यार, fan, क्यों? As a fan मैं तो चाहती हूँ कि ये वो पार्ट खेलते हम ही कट रहे, करेंगे यार खेलते। सुरभि, ये पार्ट हम कट करेंगे. But he's making it so obvious, वो हर जगह No, he जाके also बोल रहे said हैं. when what's his name? Danny Morrison. Danny Morrison नाम है क्या उसका? हाँ. Danny Morrison तो WW wrestler नहीं है क्या वो? Danny Morrison said this is your last and how did you feel? He mentioned you're saying it's last. It's not me who said it. So But he said it. he's giving so many signs. Yeah, what is Yeah, this? he. माई भाई हम आप 10 और 200 रुपए ज्यादा ले लो, 1-2 साल और खेल लो यार प्लीज. यार बहुत सारे signs वो हर जगह जाके उन्होंने बोल दिया है. They are giving me a farewell. You know. Yeah, he कि spoke I don't about have Chennai a- crowd. He spoke हाँ. about Chepauk not getting Yeah. enough games, and then he said कि He said बनता everywhere. वो है. जब कोलकाता भी गए थे तो And then उसने he बोला mentioned it's a कि very special place. yeah. यार यही मैंने कहीं पढ़ा था कि उनको इंटरनेशनली एक फेयरवेल गेम नहीं मिला, बट इमेजिन आईपीएल में एवरी मैच फॉर हिम, Every match is like a farewell game. या एवरीबॉडी इज मेकिंग इट अ फेयरवेल गेम. मतलब 14 डिफरेंट वेन्यूज पे जाकर And आपको I'm वो having 14 goosebumps, dude. Like Exactly. it's crazy. And ये कभी नहीं देखा है मैंने. I've been following cricket since a long time now. I've not Every seen crowd इतना had fandom. more yellow than the home Exactly. side. I still remember I was doing this rehearsal before Guys, IPL. sorry, this is a MSD special. आपको अगर बोरिंग लग रहा है आप बंद करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. यार, But this is MSD की MSD बारे- special. बातें I don't know. किसी को boring हो नहीं सकता है लगती। क्या पता, I don't know. But this is an MSD special from now on. तो bear I with still us. remember मतलब आईपीएल के शुरू होने से पहले आई वाज डूइंग अ रिहर्सल विद केदार जाधव. अगेन आई रिमेंबर जब धोनी रिटायर हुए थे तब केदार ने एक बहुत स्पेशल लेटर लिखा था इंस्टाग्राम पे. Yeah. Because he is also again a big MSD fan. Of course, who isn't? So I met him, and obviously when you are a CSK fan and you meet anyone from CSK, it's like a wow moment for you. I still remember उन्होंने हमें MI के अगेंस्ट जिताया था, इंजर्ड होके बाहर गए थे, फिर लास्ट में आए, छक्का मारा था, ब्रावो था सामने. अरे So I मतलब every time I've met these guys, I पहले thanked them for this. Yeah. I remember Robin को मैंने जब for the first time when I met him during FIFA, I thanked him कि you played that superb innings जिसकी वजह से हम पहुंचे आगे. मतलब I've been like नहीं यार, these are the I stars understand. because of which Yeah. CSK has been इतना consistent. When I met Kedar, I again thanked him for that. It's so special because I remember जब auction हुआ था, when CSK was making their comeback after the entire controversy happened. Yeah. तो उनकी टीम को डैडीज टीम बुलाया गया था कि इट्स द डैडीज आर्मी ऐसा Daddy's कुछ army. बोला. And they made They won the exactly. trophy. They won the trophy. Exactly. 34-35 years I think was the average age of the team. That is what I'm भाई living शेन on right वॉटसन now. मतलब 2018 हाँ 2018 we won the trophy. 2019 we didn't. 2020 I really like how she's saying we. Oh, I really CSK. like how she's saying we. Yeah. I associate myself to Love CSK. is pretty come on. evident. Yeah. So 2020 हम playoffs में बाहर हो गए. Playoffs में नहीं पहुंच पाए. पहुंचे नहीं. बाहर हो गए. 2021 we came back, we won the trophy. 22 we finished last. 2022 We हम finished playoffs last. में नहीं पहुंचे. We finished last, no? MI finished last. We were 9th. And then this is 2023. So if everything goes well. Could be CSK's cup for sure. Yeah, so I was telling कि मैं केदार से तो रिहर्सल चालू था, मैंने सवाल पूछा उनसे कि होम एंड अवे फॉर्मेट वापस आ चुका है आईपीएल में इस बार. तो एंड फर्स्ट गेम वाज जीटी सीएसके नो, सो उसका रिहर्सल चालू था. सो मैंने उनको पूछा कि कितना डिसएडवांटेज होता है फॉर अवे टीम, मतलब होम टीम का एडवांटेज होता है. उन्होंने बोला कि मैंने बोला और सीएसके यहाँ अवे टीम, तो उन्होंने बोला कि सीएसके कहीं भी अवे टीम नहीं है. करेक्ट. तो दिस इज नॉट दिस सीजन, दिस इज ऑल सीजन कि सीएसके, वो बोले कि सीएसके को कभी हमें कभी ऐसा बिकॉज आई हैव प्लेड विद द टीम, हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम अवे टीम है, क्योंकि हमें इतना सपोर्ट मिलता है क्राउड से, चाहे हम फिर अहमदाबाद में खेले, मुंबई में खेले या कहीं भी. You should see, you know, I'll tell you, you should see Sakshi Dhoni's story before the match, where she's with him before the match, and
sharing some ऐसा behind the scene where the team is reaching the ground. They're in the bus and Dhoni is standing right in front of her. And पूरी की पूरी जनता बस के सामने बस वो भाग रही है और like just with their cameras कि अरे एक झलक बस मिल जाए. It's emotion यार, he's emotion. वो बोलते हैं ना the man, the myth, the legend. वो फील नहीं होता बहुत लोगों को. एक बॉल खेलने आता है वो. और अगर एक बॉल लगा दे ना. You remember the time when he hit like 2 sixes back to back अभी पिछले I think couple of games back. याद है भाई. वो पूरा का पूरा stadium was they had their flash on. I mean that is what you want him to do. और वो आपने देखा इस बार के IPL से पहले उनके biceps buffed up full buffed because up. he was यही plan था उनका. The man at 40 he has a knee injury. Yeah. Last game he was limping. Wrong with last game he was limping. Yeah. So he always has this knee cap और कुछ तो वो डालते तभी उनके knee area में बहुत it feels like कि कुछ तो लगाया. The last game I think last couple of games. And he's mentioned also in the I think post match presentation में एक बार mention भी किया था कि I've told the guys to not make me run. Oh yeah. He said that yeah. He mentioned like, yes. My role is to come and hit sixes or stand on the other side. Don't make me run. Because अब वो दिक्कत हो रही है उनको knee की. So you want him to do that यार. Dhoni last over or sixes. It's a love story written. Yes. It's a love story written. वो you know अभी जो last match का press conference हुआ है उसी में शायद उन्होंने बोला था कि a lot of times you just have to give player the chance. You have to give them the security and for that you have sometimes some players have to sacrifice their and I feel that Dhoni was the one who has because वो पहले number 4 पे खेलते थे and he could have made massive records. I even remember I think 2019 में when IPL happened 2019 में CSK खेल रही थी ना. हाँ हार गई. So 2019 में 2019 was the final we lost. 2019 में I think he was playing really well. Like that season was one of his really nice seasons where he came up the order. He was smashing it like we saw the vintage Dhoni back in 2019. अब आते यार 19.4 में मैं बोल रहा हूँ शिवम दुबे क्यों खेल रहे हो तुम अच्छा. 19.4 में भी लोग उम्मीद कर रहे होते कि नहीं यार अंबती रायडू क्यों भाई छोड़ो सब. Why can't MS Dhoni open? MS Dhoni the earliest we've seen him I think is number 3. That too on वो इंडिया मैचेस में IPL में तो नहीं. Rare occasions. But यार finisher भी तो कोई चाहिए ना. I don't think we've seen a better finisher than him. At least जितना क्रिकेट मैंने देखा है. No chance. He's like a great finisher. And भाई एक बॉल के लिए आता है बंदा पूरा का पूरा स्टेडियम. चीजें बोलता है ना मतलब I wait for his I like everybody is just waiting for his post match presentation. I remember Harsha Bhogle. उनके बाद if I like किसी का post match presentation it's Rohit Sharma. हाँ. He's so cool. He's so again हमारे जैसे you look at his let's come to Rohit Sharma now. You look at his ऐसा post match press conference. I remember one of the press conferences I think वो ICC World Cup 2019 का था. And they were traveling from one city to another for some match or I think किसी का तो I think it was MSD's birthday. So I remember you got it right. I remember. अरे वो बंदा पूछ रहा है so it's I'm saying Dhoni's birthday. What you'd like to say? No, that was asked in I think कोई Indian journalist ने पूछा तो he said कि हैप्पी बर्थडे बोलेंगे. मतलब हैप्पी बर्थडे बोला केक काटेंगे शायद हम ट्रैवल कर रहे होते हैं. Yeah, Manchester I think they were traveling to Manchester. That is what I'm saying. He's so Mumbai, no? He's so Mumbai outright. ऐसे मुंबई निकलता है. He's so मतलब अभी मैं कल I think I was watching Breakfast with Champions और उसमें Which episode did you see? मोहम्मद सिराज उसमें वो भी बोल रहा था कि यार हाँ I remember मतलब मजा आता है रोहित शर्मा के साथ. वो बोला अरे ये यहाँ डालना वहाँ क्या डाल रहा है यहाँ डालना अरे क्या करना मियाँ क्या करते हो तुम. I still remember पाकिस्तान के साथ हमारा कोई मैच था जिसके बाद उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो किसी ने उनको पूछा था कि आप पाकिस्तान को these things are going wrong तो आप क्या एडवाइस दोगे. अगर मैं कभी पाकिस्तान का कोच बना तो मैं बताऊंगा. This Rohit Sharma, no? Yeah. Again. Yeah. It's so nice. It's a witty answers he does not have that. मतलब he doesn't. धोनी के टक्कर वाला. नहीं वो flair. He doesn't care about the flair of language या वो सब. I mean. अगर मैं कैप्टन मैं तो बताता हूँ मैं.
He's like that. I still remember ऋषभ पंत बीच में ड्रॉप हुए थे. I don't remember which year this is. But ऋषभ पंत ड्रॉप हुए थे और बार-बार लोग बोल रहे थे कि why you're not making ऋषभ पंत play, why you're not making. फिर ऋषभ पंत खेले और शायद वो मैच अच्छा नहीं गया था. I remember, yeah. तो the journalist asked him about ऋषभ. Yeah. तुम लोग ही बोल रहे थे ना उसको क्यों नहीं खिला रहे हो, उसको क्यों नहीं खिला रहे हो. नहीं, तुम लोग ही बोल रहे थे उसको नंबर 4 पे लाओ. लाए. ये लोग लेके आए ना. अब भी तुमको प्रॉब्लम है. तो I really like when Rohit Sharma backed Virat Kohli when Virat Kohli was not performing well. Yeah. And Virat Kohli backed Rohit Sharma when Rohit Sharma was not performing well in a T20 match. Yeah. I remember Virat Kohli said, like a certain journalist asked him, ki, so do you think Rohit Sharma should be dropped from the T20 side? Ye India ki baat hai. And I remember Virat Kohli saying, you're saying we should drop Rohit Sharma from the T20 side. Yeah. That's what you're saying. And then he started like, ऐसे ही started. It just even Rohit Sharma is like, आप विराट कोहली को ड्रॉप करने बोल रहे हो, मतलब आप क्या बोल रहे हो यार. I mean लोगों की ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं इनसे. मुझे याद है कि विराट कोहली का जब लीन पैच भी चल रहा था ना, तो वो लीन पैच नहीं था. वो फिर भी हर दूसरे मैच में 50 रन बनाए. I'll tell you what. It's the bar. It's the bar that he set so high for himself that nobody. 50 भी बनाए. 50 भी कम है. अभी 2 सेंचुरी मारा ना वो बैक टू बैक. अब अगर अगले मैच में अभी तो अगला मैच है नहीं उनके लिए, बट अगर अगले मैच में 50 बनाते तो बोलते यार आज तो कम रन बनाए. Exactly. अरे बॉल ही 120 है भैया. तुम समझो. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है हमारे लोगों से. मतलब कैसे अगर किसी बंदे ने तुमको सालों साल इतने रन्स बनाए हैं, इतने मैचेस जिता कर दिए, तो तुम उसके बाद कैसे बोल सकते हो कि भाई इसको ड्रॉप कर दो. Just unrealistic expectations. I think I don't know if you follow NBA or not, but not recently there's this player called Giannis Antetokounmpo. So उसका एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अभी वायरल हो गया था. Okay. Because so he plays for a team called Milwaukee Bucks. This I know. This you know. And they didn't make it to the playoffs this season. Okay. So then the same guy who asked him this question, like the same question last year, asked him this question, the journalist, ki do you see this season as failure? And his answer was so good. He said ki he was irritated. Oh yeah, I think I've seen that viral video. Yeah. And it makes so much sense, bro. क्या होता है failure? Yeah. I now remember. Yeah. And he said it so nicely that you work for an agency or whatever. So do you get promoted every year? If you don't get promoted, does that mean it's failure? And I've seen and उसके साथ ही ना कोबी ब्रायंट का वो वीडियो आ रहा है जहाँ उन्होंने भी सेम चीज बोली है कि what is failure? There's nothing called failure. And which makes so much sense. We had an actor here on the show before. Have you seen The Family Man on Prime? ठीक है. Unke one of the actors was here. So he mentioned that. So I asked him ki you as an actor when you were starting out as an actor, door slams and rejection is a very common thing in terms of acting, right? And he's giving auditions and all of that. So I asked him, how do you deal with that door slam? He's like, audition एक actor का रियाज है. वो करके ही सीखता है. Yeah. So if you're saying exactly, I agree with him पूरी तरह से. The more you face failures, the more, and it's not failure, the more you don't get what you want when you want, the more you realize the value of that thing. जैसे हर दिन अच्छा नहीं होता है. हर दिन is not, you can't be your best every single day. Correct. You can only practice to be your want to be. Like how it goes for against sports. हर दिन विराट कोहली जाके 100 नहीं बना सकता है. रोहित शर्मा as much as we want him to, but हर दिन doesn't नहीं हो happen. सकता. हर दिन जाके धोनी लास्ट बॉल पे छक्का नहीं मार सकता है. संदीप शर्मा के सामने वो मैच हारे ना, हम नहीं लगा छक्का. हर दिन नहीं हो सकता है तुम्हारा बेस्ट. And to accept that takes guts. And to it only makes us human ना. हम machine नहीं हैं. हम चाहते हैं कि हम कंसिस्टेंटली डिलीवर करें बट आएंगे वो बुरे दिन. सिराज भी उस एपिसोड में बोल रहा था कि जब पढ़ती है तब अच्छी खासी पढ़ती है. 50 रन लगते हैं. वो ही मेंशन ना 4 में 40 तो मैं खाता ही हूँ. He like कि हाँ चलो विकेट्स आते तो 4 में मैं 40 खाया ना मियां. It just
जब तुम इन क्रिकेटर्स को सुनते हो ना, स्पोर्ट्समैन को सुन, not only Tell cricketers us, but only sportsmen. share some experience of maybe say a press conference that you did, or like say Yeah, I've if not you've done like an on ground presentation where you met. So you mentioned you shared an experience about Robin Uthappa, about Suresh Raina, about RP. Yeah. Who else have you met, and how has been the entire experience? Not just like male cricketers, but WPL as well. Yeah. So Maybe share something fun, interesting, whatever, if you recall something. I remember again. WPL में कैसा था? How was WPL? WPL was very nice. Yeah. The like personally, it's very close to my heart because we were waiting for a women's part of IPL since a very long time for it to come. Then for me to go to host, like to be a part of it in itself, like it's like being a part of history. How many people have you met from the Indian women's cricket team? I met Smriti. How is she? She's very nice. She's very humble, very very sweet, and I think the first, like the day I met her was the first time her team won because RCB जीत नहीं रही थी. तो I remember पहला ही सवाल, कितना अच्छा फील हो रहा है कि फाइनली RCB जीत गई. She's very nice, very humble, बहुत स्वीटली बात करेगी. एंड ऐसा लगता है कि यार मतलब मन में ऐसा फिर भी होता है कि you're talking to Smriti, but she's very nice, very humble. I was just saying that whenever we see Jemima's personality online, she's so ऐसा bubbly. You see her dancing on ground as well. She's like repeating the steps, and I'm like, Jemima yaar. Have you seen her episode, wo Breakfast with Champions, whether the first episode? Yeah, no, I've not. No? So I've not. It's the first episode of this season. I've not seen a lot of episodes of Breakfast with Champions. वो तो 4 ही episode release हुए. नहीं मतलब अच्छा, starting overall, से जब से हुआ है ना. I've seen Rohit, I've seen Virat, I've seen Ashish Nehra. Epic. What a guy. Yaar. You've met him? No, I want to. He's the definition of chill. Chillar, yeah. He's the definition of chill. So. He's so like you've seen that episode, no? Yeah. He's like हमें he'll crack that joke. नहीं होती. He'll crack that joke and he'll laugh at like himself for like 10 But I seconds. love the part where he said, अरे यार. हमें नॉर्मल बीमारियां नहीं होती. हमें होती है तो ऐसी बीमारी होती है कि सीधा हॉस्पिटल जाएंगे हम. I loved that part. And that man had so many surgeries. Yeah. उसके बाद भी he played so well. I mean, yes. Anyway, let's talk about Jemima. हाँ. Yeah. You've not met her, no? I've not spoken to her. I've seen her very closely, because I went to the DC का press conference जब वहाँ. And I remember like she's very sweet. I want like almost हमारा interview होने वाला था मेरा और उसका उस दिन, but she got busy with some shoot, so वो नहीं हुआ, and I was so disappointed. I think I did speak to Shikha Pandey, if I'm not wrong. उस इंटरव्यू में like I met her. I didn't interview her. I interviewed Radha Pandey. No, Radha Pandey, Radha Sharma, Radha Yadav. ये तो पक्का काट देना please. It's Radha Yadav. And उसका story is very interesting. Spinner है ना वो? हाँ ठीक है. चेहरा याद है मेरे को. उनके पापा का एक फ्रूट का वो था ठेला कांदिवली स्टेशन के बाहर. Oh. So she comes from a very humble background, very small. Even Yashasvi Jaiswal used to sell pani puri. Exactly. I've met him. It's just so good to see these people flourish in their career. Yeah. You met him. I've met Yashasvi. So I was flying to London, and he also happened to fly on the same flight. Yeah. So we were sitting at the Bombay airport, and I happened to like he was getting his check-in done and everything, and I was like, this is Yashasvi. So we just spoke for a while, and then we happened to be sitting in that waiting area. वो गेट के बाहर वेट करते हैं ना कि हाँ अब फ्लाइट बोर्ड होगा तो आप वेट करते हैं. सो ही वाज सिटिंग देयर, उसके पास ही मैं बैठा था. एंड बिकॉज वी आर ऑल वेटिंग, सो कुछ करने को नहीं है. सम पीपल वर कमिंग, क्लिक पिक्चर्स, ये वो. एंड आई टोल्ड हिम दैट आई हैव प्लेड क्रिकेट ऐसा फॉर बंगाल. सो ही ऑल्सो रियलाइज कि ठीक है ये ऐसी एरा गैरा नहीं है, कुछ तो लाइक कुछ तो किया है. सो we spoke for like a good half an hour at the airport, and I was asking him about MS Dhoni as well. I was like, Yashasvi बताओ यार थोड़ा सा मतलब धोनी के बारे में. And he said कि यार ओ भाई मतलब
कुछ करना है तो उनकी तरह कुछ करना है ना, लाइक यार. So and now he played so well. So I have a friend of mine who is a very die-hard supporter of Rajasthan Royals. मैं कट रही हूँ क्या? नहीं. Was a die-hard supporter of Rajasthan Royals. And I told him कि यार I met यशस्वी. तो he was like, अरे यार दीपक भाई आप मिल लिए यार यशस्वी से, ऐसे कैसी बात होगी? मैं बोला यार हाँ तो अब coincidence था, ऐसा नहीं कि it was planned. तो मैं बोला देखो मैं मिल लिया, अब अच्छा खेल रहा है. तो आई टोल्ड हिम कि नेक्स्ट किससे मिलना बताओ. ये भी इतनी इंडियन आदत है ना हमारी. मुझे याद है मैं जब भी मैच देखती हूँ ना, अगर मैं घर पे किसी कोने में बैठी हूँ ना, मेरे को याद है 2011 का वर्ल्ड कप और वो ओडीआई होता था प्रॉपर 50 ओवर. तो मैं एक जगह पे बैठती थी, 2 बजे मैच शुरू होता तो 2-2:30 बजे मैं एक जगह पे बैठती 2 to 11. और जब तक वो मिड इनिंग्स नहीं होगा ना, मतलब जब तक एक टीम का बैटिंग खत्म नहीं होता, इंडिया का बैटिंग या बॉलिंग, मैं उसी जगह पे बैठी रहती थी. सुपरस्टिशन. हाँ बहुत. और मुझे ऐसा लगता था बस मैं इधर से हिली तो विकेट गिरेगा. मतलब वो लोग जो खेल रहे हैं उस पे तो भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा है कि अगर मैं यहाँ बट ये होता है यार, इवन विद प्लेयर्स इट हैपेंस, लाइक दे डू दैट. हाँ मैं मॉम इज लाइक तो पागल है क्या? तू पागल तो नहीं होगी. आई टेल हर आल्सो, आई एम लाइक मम्मी अभी उठना नहीं. मम्मी बोलती हाँ मेरे ही उठने से विकेट गिरने वाला है. मैंने बोला अगर गिर गया तो दिस वाज देयर इन एमएस धोनी आल्सो. हां हिज मॉम आल्सो. या शी ऑलवेज यूज्ड टू प्रे आई थिंक. या वो प्रे नहीं, खाना बनाने जा रही थी जब वो आउट हो जाता था ना एमएस धोनी. सो शी यूज्ड टू गेट अप एंड शी यूज्ड टू टेल her husband की चाय खाबे, मतलब you wanna have चाय, and then she used to get up and then he used to say अरे तुम बैठो यार, तुम उठो मत, तुम बैठो यार, तुम देखो यार. Yeah, so I it's tell such my an mom emotion also, यार. my mom is she gets irritated. क्या हो गया है, मेरे चलने से थोड़ी विकेट गिरने वाला है. So मतलब even if I had to go to the loo, I'd wait for 50 overs to go to the loo. And then जब ये काम करना बंद हो गया ना, so that's quite a lot. बीच में एक I remember what was that Asia Cup where that was Asia Cup, the best match ever, India Bangladesh. Oh, of course, run out, yeah. The bowling the last over. Run out, yeah. I remember जब मेरा नया था तब मैं एक जगह पे बैठती भी थी और फिर अगर विकेट गिर रहे हो ना, जैसे वो मैच हम हार रहे थे, तो I remember so my house was like hall. I'm sitting here bed पे, सामने टीवी और पीछे दरवाजा और दरवाजे के ऊपर गणपति भगवान की. So always used to turn back and say, भगवान प्लीज विकेट मत गिरा ना. अब मैं बात भी नहीं करूंगी जब तक मैच नहीं खत्म हो रहा ना. मतलब मैं भगवान को लालच दे रही हूँ कि इंडिया को जिताओ. मैं मौन व्रत रखने को तैयार हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ जब तक मैच नहीं खत्म होगा. आई वोंट सेलिब्रेट बिकॉज़ माय मॉम एंड माय भाई यूज्ड टू थिंक ये पागल हो गई है भाई, मैं साइकोपैथ थी ना ऐसे कि वो लोग बोलते थे आजू बाजू वाले ना. We have to watch one match together at least. मतलब it's difficult to watch a match with me because I'm देखते हैं, let's see, we'll figure. अरे तो so मुझे याद है कुछ कम है क्या? I didn't see anything and मेरे भैया, so my cousin is like he's watching the match and he'll call कि क्या लगता है क्या होगा, क्या लगता है क्या होगा. तो मम्मी बोल रही है बेटा वो तो बात नहीं कर रही है इस समय. वो बोल रही है नहीं देना उसको फोन. I said I'm not, मैं इशारों में बोल रही हूँ, बात नहीं करूँगी. At the moment we won the match, I yelled at, of course, जितना जोर से मैं चिल्ला सकती हूँ ना, मैं चिल्लाई हूँ, मैं रोई. It is like a personal victory. Yeah, it's like अरे यार दरवाजा बंद करने लगी, ये पागल हो गई है क्या? ठीक है मैच जीते. मैंने बोला मम्मी अब देख रहे हो कैसे जीते हैं. Because Bangladesh was literally celebrating two balls prior. I know. And I remember Suresh Raina only posted कि never celebrate before. I don't remember this. I think but, he did. I remember that उसके एक दिन पहले, मतलब उसके I think run out के पहले हार्दिक पांड्या was bowling the last over. रविंद्र जडेजा took a catch. जो कि 2 बार वो रोल किया था उसने. शिखर धवन dropped the catch. No, he took one. Shikhar Dhawan took the catch. Yeah, one catch. Jadeja took the catch. दोनों जडेजा ने लिए थे. Jadeja only took the catch. 2 बार उसने वो रोल गिर के रोल किया था. He got up, he gave a high five to Shikhar. And the last ball, I think 2 रन या 3 रन कुछ तो चाहिए था. 2 रन I think. 3 रन चाहिए था. 2 रन चाहिए था. And Dhoni being Dhoni. Dhoni being Dhoni, 1 glove off. Yeah. He runs. He knew it. He knew it has to run. He knew he has to run. Like and he wasn't like कि नहीं मैं इधर से निशाना मारूंगा. And there is a clip. There's a part where
when he runs him out, he says out. He said that. If you see the clip very closely, he runs, hits the bails, and then Yuvraj Singh, I remember, was in the frame. Yuvraj Singh comes from this side, Virat Kohli comes, everybody come together, and then he says out. And when that was epic, when he says that, बस out है तो है ना, it's Dhoni review system. कहाँ से हम जीते हैं वो मैच, कहाँ से? I remember Champions Trophy final, India England. No way. एक बॉल 6 रन चाहिए, रविचंद्रन अश्विन को उसने ओवर दिया है. We were not winning that match. 120 पे हम all out हो गए थे उस मैच में. 126 was the target, if I closely remember. If I remember. somewhere close. हाँ, मतलब. I think Dhoni भी duck पे out हुए थे उस Everybody went, yeah. Shikhar played well, I think. If I closely remember, Shikhar played well. Shikhar was like our ICC man. Yeah. ICC tournaments में he used to perform very nicely, like how Yuvraj. Yeah. वैसे Shikhar Dhawan, I remember, he used to like always perform nicely. वो मैच हम कहीं से नहीं जीत रहे थे, पर वो that one over, I don't remember, it was Umesh Yadav or it was Ishant Sharma. Both the catches taken by Ashwin. Ishant Sharma. Ravi Bopara out हुआ था. Ishant Sharma. It was Ishant Sharma, I think. And क्या बदला था वो मैच. And that was the first time I'd seen Dhoni celebrate. Like he actually jumped behind the wickets when we won. Yeah. It was so nice. Last ball, एक बॉल 6 रन चाहिए था. I think Ravi Bopara was batting, or I don't know who was batting. One ball, Broad was there. One ball, six runs needed. Last over, Ravichandran Ashwin bowling कर रहा है. मतलब and Mahi is standing behind the stumps. He bowled a short. Ravichandran Ashwin bowls a short ball. Spinner bowling a short ball. Yeah, Ravichandran Ashwin can do anything. He misses. Dhoni jumps in exhilaration and he's like, जीत गया यार. मतलब there are infinite stories यार. Manifestation. Yeah. I to manifest that. I interview Dhoni, but I interview Ashwin also. He's like so smart, street smart player. Have you seen his Twitter? He handles himself. Have you seen his Twitter? Yeah, it is fantastic. Like self-doubt is so easy and self-belief is so difficult. Wow. So difficult. मतलब self-doubt ऐसे होता है ऐसे. And self-belief actually जो कर सकते हैं ना वो मैं I have not reached that stage yet. Like I believe in myself, but I'm still like kind of in the process of that. वो जो लोग होते हैं ना कि नहीं हमें self belief. Yeah. मतलब it feels like very cliche, but it can actually change your life. 100%. मैं हमेशा मैं अपने आप को एग्जांपल देती हूँ. Be like Surya Kumar Yadav. He just goes out confidently. That is another man. Expresses himself. I have so much respect for. I think after Dhoni. पहला बॉल छक्का मारेगा पता नहीं कहाँ पीछे मार रहा है छक्का. क्या है भाई? किस तरह से पागल इंसान क्या कर रहे हो भाई? स्काई यार, what is wrong with you? He's made it so easy and he plans all these things. ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल को कोई लेग साइड मिड पॉइंट मिड पॉइंट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का कौन मार सकता है भाई? True. I went for a Mumbai match अभी recently. Which match did you go for? Mumbai RCB. I had also gone. Mumbai RCB. अच्छा. And I'm like, so I had the option to go and sit in the lounge area, but I'm like, नहीं मुझे सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखनी. And I'm like, I'm demanding, नहीं गिर नहीं रहे अभी, गिरेंगे तो मजा आएगा. He played well. Yeah, he made them win the match. No, century वाला मैच, RCB वाला मैच नहीं था. बट मेरी इतनी इच्छा थी ना कि नहीं खुद के शॉट मारे, एक बार गिर भी जाए, मुझे सब देखना है. मुझे मतलब दैट इज सूर्य कुमार फॉर यू. ही इज फॉलिंग एंड ही इज, पर वो गिर के भी शॉट चेंज आ रहा है. सूर्य कुमार भाई पहला शॉट, डू यू रिमेंबर हिज इंटरनेशनल डेब्यू? या आई रिमेंबर. पहला बॉल छक्का पीछे किसको मारा था? आई थिंक डेल स्टेन को मारा था. नहीं, डेल स्टेन तो नहीं खेल रहे थे तब तक. किसको मारा था? देयर वाज सम रियली नाइस फास्ट बॉलर, ही हिट अ सिक्स. I don't remember the name, मेरे को याद नहीं है एकदम भी, but वो he was fast, like he was really quick. I don't remember the name. I want that kind of confidence, man. I mean, पहला बॉल 4 तो 4 पक्का पता ही है उसका. He's like सहवाग. बोलते हैं He's like सहवाग. I remember अभी जो 100 में जब 100 जब स्कोर किया था, एक शॉट था जो शामी बॉलिंग कर रहे थे शायद, और ऐसे मारा था शायद, एंड
टप्पा बढ़ के पीछे को गया. हाँ. And I'm like, bro, कैसे? And everybody was wondering कि इस shot को हम क्या नाम दें? There's no, it's the Surya Kumar special. Yeah, he said, no, I planned that shot. I knew कि ऐसा ball आएगा. I knew कि I can hit it over there. You see so the it's not the like man, a shot that happened by mistake. हाँ. And he said कि नहीं मैंने plan कर रखा था. उस over में अगर ऐसी ball आती तो एक shot में वहाँ मारता एक shot. So that's planning. He knows कि where he wants to hit. And he finds it so easy. I just fanboy when I see him bat, and I'm like, ये क्या कर रहा है? I've told myself so many times before a show, na, go express yourself like Sky. Go Sky, express yourself. I mean, you don't worry. You just go be confident and do it. Like he's just so confident. Outside off का ball को भैया again deep mid wicket के ऊपर से छक्का कौन मार रहा है? He makes it look so कैसे easy. मार रहा है? And I love the bromance between him and Kohli. Kohli, Manla. Ala Bau, Manla. That's so good. So good. Yeah. Amazing. Yeah. I think we've had a fair bit of discussion around cricket. Thank you so much, Surbhi, for doing this. I hope the audience would have enjoyed this. Cricket का होने वाला ये आपको मैंने पहले बता दिया था, तो you should not have any complaints from me. But thank you so much for doing this, Surbhi. We might do a repeat episode if the Janta wants it. Yeah. So we'll do a repeat episode if that happens. But thank you so much for doing this. Your final thoughts on this camera. बता दीजिए कैसा लगा आपको शो पे आके. हमने बहुत अच्छी चीज़ें के बारे में बता देना प्लीज़ थोड़ा सा. And then we'll wrap it. I mean, thank you so much for asking me to come here. Yeah. I mean, how did that thought come to you? I want to ask मेरे को this. नहीं वो छोड़ो वो thought तो आया. Why did our outro template is why did you say yes to the podcast? I mean, why would I say no to this? I mean, there was no reason to say no. ठीक है भैया इसको हम intro में डाल देंगे hook as a hook we'll play this. I mean, I'm called to the chill hour and anytime I get to chill and with you, why not? I mean, amazing. I mean, if I had to do my first podcast, this is the best one to start with. Sweet. People remember their firsts. I'm sure you will remember this. Yeah, I said it already. First is always special. Yeah, I'll always remember this. Amazing. And thank you so much, man, for inviting me. Pleasure. And it was so good. Talking cricket is always fun. Which is why it comes from a very selfish interest, yaar, Surbhi. Matlab, I am very selfish that way. Cricket ke bare mein, I was like, we've had actors on the show, we've had content creators on the show, we've had entrepreneurs on the show, we've discussed our one of the episodes we went live with is with a beatboxer. So we've had beatboxers on the show as well. And from there to me. Yeah, so we wanted a different perspective on the show, right? And I was just happened to see Jio Cinema. I was like, यार इनको बुलाते हैं यार इंटरेस्टिंग होगा गुड एपिसोड होगा एंड क्रिकेट है सो ऑफ कोर्स वील हैव अ लॉट ऑफ ऐसा कॉमन कन्वर्सेशंस सो good fun having so nice man good chat. It was fun to be here. Only the thing around my coffee wasn't sweet, but this guy is very sweet and the show is very nice. Subscribe and the mug is also very sweet. The chill hour. Subscribe to the chill hour. I hope this episode was chill for you guys. Amazing. Thank you so much guys for tuning in.